with great concern, अब ये लिख रहा है provincial election commissioner लिख रहा है, with great concern I have the honor to state to bring. I don't know why you're not focusing on the matter. You have brought a contempt application before us under Article 204. We are not hearing the case. All we have to do at this stage is to see if our order has been complied with or not. That is the scope. Please do not expand the scope of this matter. This matter is restricted as per your own filing, Article 204. It's a contempt matter. Pursuant to the order dated 22nd of December 2023, the Election Commission, we wanted to see if they've done something. They have immediately on 26th of December, after 4 days, within 4 days, have filed this huge compliance report. Now, if you are saying, नहीं देखिए इसको या मुझे कॉपी नहीं मिली है तो अब आप देखिए ना ये तो कोई इसको कल रख लें बेशक आप प्लीज ठहरें, मुझे नहीं मिली है ये, आप जरा बात समझने की कोशिश तो करें ना। अब आपको मिल गई, अब आप पढ़ लीजिए। अब ये हम रोजाना देखिए, रोजाना आपका एक केस तो नहीं हम चलाएंगे कि पूरे सुप्रीम कोर्ट में हम फिर ऐसा करें कि दिस सुप्रीम कोर्ट शुड नॉट डू नो अदर वर्क बट दिस। ये 200 सफ़े में यहाँ खड़ा होकर तो आपका टाइम जाया नहीं करूंगा। नहीं करें साहब, अब इतना किया और कर लें, कोई फर्क नहीं, हम रात तक बैठ सकते हैं आपके लिए, मगर रोजाना नहीं बैठेंगे। आप एक ये सफा तो पढ़ नहीं रहे हैं, अब ये तो जरा प्लीज पढ़ लीजिएगा। कौन सा सफा भाई? आप बात समझने की कोशिश करें ना। अब आप ऑर्डर की कंटेम्प्ट में आए हैं। क्या ऑर्डर से पहले बातें और इरेलेवेंट बातें नहीं। अब आप देख, हम इनसे सवाल पूछेंगे आपने ऑर्डर पे अमल किया है, इन्होंने क्या किया है। हो सकता है गलत कह रहे हो, मगर इतनी बड़ी उन्होंने कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल कर दी है, लिख करके उन्होंने सारे इंस्ट्रक्शंस अपने DROs RO सबको इशू कर दिए हैं। अब उसमें कोई खामी दिखाएं तो बात समझ आती है। ये अखाड़ा नहीं है क्या, किसकी आवाज भारी है। आप बात कर लें, हम खुश चुपचाप सुनेंगे, फिर हम जरा जुमले कंप्लीट कर लें। आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। नहीं तो फिर आप हमें बोलने देना। चलिए बोले। पहला पॉइंट ये आप नोट कर लीजिए, इसका जवाब दे दीजिए, फिर हम दूसरे पॉइंट पे आ जाएंगे। पहला पॉइंट अब आपको हमने समझा दिया। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने तो कंटेम्प्ट किसके खिलाफ मांग रहे हैं? आप IG और चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ मांग रहे हैं। उनका क्या लेना देना है इलेक्शन से? इन दो बातों का जवाब दे दीजिए बस। अर्ज करूं, ये जो आपने ऑर्डर किया था, ठीक है, उस पर उन्होंने बिल्कुल सुना। हमें सुनने के बाद उन्होंने जो है ये प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर्स को और बाकी को लेटर्स लिख के, अब प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर उसके जवाब में क्या लिख रहा है ये जरा पढ़ने की तो मेहरबानी कर लीजिएगा। आपकी तो बात मैंने इतनी सुनी, ये भी जरा पढ़ लीजिए प्लीज। With great concern, I have the honor to state to bring to your kind notice that this office is flooding with numerous kind of applications. जरा डेट, आप डेट नहीं पढ़ रहे हैं उसकी। 24 दिसंबर 24 दिसंबर है। कंप्लायंस रिपोर्ट की डेट पढ़िए। 24, ये वही तो इन्होंने उसी दिन। नहीं आप पढ़िए ना प्लीज डेट। ये आप पढ़ेंगे नहीं अगर आप डेट पढ़ लें। उसकी है 26 दिसंबर। तो भाई इस आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उस पे उन्होंने हुक्म जारी कर दिए हैं 26 को, तो उससे पहले वाली बात पढ़ने का कोई मकसद नहीं होगा ना। अच्छा, उसके बाद की भी मैंने इसके 26 के बाद की कोई बात बताएं। 22 का ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, 26 पे इन्होंने कंप्लायंस कर दी उसकी, ठीक है। अब इसके बाद कुछ उन्होंने गलत चीजें की हैं तो बता दीजिए। मैं आपको CD भी चला के जरा देख लीजिएगा, और जो कुछ आपने भी मीडिया पे सारी दुनिया ने देखा है कि जिस तो मैं तो मीडिया देखता नहीं हूँ। चलें, अच्छा करते हैं आप, इट्स सिकनिंग अदरवाइज। लेकिन सर गुजारिश ये है कि इन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर्स को ब्लॉक किया हुआ था, वहाँ हैवी कंटिंजेंट ऑफ पुलिस खड़ी हुई थी। वो पूछते थे आप किसके हो, तो जब PTI का पता चलता था तो वो कैंडिडेट को भी उठा लेते थे, प्रपोजर और सेकेंडर को भी उठा लेते थे, डेजिग्नेटेड ऑफिसर को भी उठा लेते थे। यहाँ भी यही जो कंप्लेंट्स की हैं उससे पहले भी हो रही थी, इनके 26 के बाद भी यही हुआ। ये बातें तो आपने लिखी भी नहीं है। लिखी है, कहाँ लिखी है? ये जो मैंने CMA दी है ही नहीं, लिखी नहीं कहीं आपने। सर सब आप ऐसी बातें तो ना करें जो आप लिख भी नहीं रहे हैं। नहीं, क्रिमिनल ओरिजिनल में देखिए जरा, लिखा यही है। और क्या, किस चीज की क्रिमिनल ओरिजिनल कर रहा हूँ ये जरा मुलाहिजा कीजिए मेरे ग्राउंड। उन्होंने यहीं से किया, ये देखिए। दैट डिस्पाइट, ये पेज कहाँ से पढ़ने? ये पेज 3
the petitioner is filing the instant contempt petition under the following grounds. यहाँ grounds मैंने लिखे page 3 के last paragraph. That despite the clear and unambiguous directions of this court in the order dated 22nd December 23, respondent number 2, that is the Election Commission of Pakistan, have failed to implement the clear and unambiguous order of this court. The failure of respondent number 2 to address the grievances of PTI is unconstitutional, unprecedented. तो अंग्रेजी है, ये उन्हें compliance कर दी है, ये देखिए ये उन्होंने फाइल कर दिया इतना बड़ा डॉक्यूमेंट. सर ये रिचुअल नहीं था कि सिर्फ आपने एक कॉस्मेटिक जो है कंप्लायंस करनी है. आपकी jurisdiction, आप यहाँ एज अ गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान आपने इंश्योर करना है दैट द इलेक्शंस आर फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट, जो आपने डायरेक्शन दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को. और ये आपने क्या किया जी? सर मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ. हमने अभी एक और सप्लीमेंट्री रिपोर्ट भी दाखिल कर रहे हैं. सो मच सो इनकी एक समरी हम दाखिल कर रहे हैं कि जितने हमारे पास डायरेक्ट भी इनकी ग्रीवेंस आए हैं कि यार इनकी नॉमिनेशन पेपर्स ले ले या इनकी ग्रीवेंस, देयर इज अ समरी and there is a complete record. We have taken every steps to ensure that their nomination papers are accepted and the RO has confirmed. The summary says so. खोल के देखिए क्या चीज है. ये तो समरी लगी है सर. नहीं तो आपको नंबर नहीं पता आपको कितने एक्सेप्ट हुए और कितने रिजेक्ट हुए? सर वो ये अभी once the RO finalizes these जो वाइस पे हमने लगाई हुई है, हमने लेटर भेजा. ये पार्टी वाइज नहीं है सर. There is a general statement, क्योंकि पार्टी वाइज तब पता चलता है when there is a party ticket and party symbols. सिर्फ यहाँ जमा करा के रिपोर्ट की है. हम नहीं, इस पे कंप्लायंस पे आप क्या कहना चाह रहे थे कि आप कंप्लायंस में सर इंश्योर करेंगे कि सारे फॉर्म जो हैं वो एक्सेप्ट हों? सर we did ensure. ये अगर समरी है तो ये थोड़ा सब्र करें. कंप्लायंस वही है जो हमने लेटर लगाए. कंप्लायंस रिपोर्ट वही है जो हमने लेटर्स लगाए हैं. नो सर, मैं आई रीड इट सर. ये समरी जो ऊपर लगी और अंदर इसके नेक्स्चर्स हैं. इसमें एक इनका कंप्लेंट आया था कि RO in a 90 confirmed that the nomination papers of the applicant as well as his daughters have been submitted and he received it. There was a grievance that they are not going to accept it. The summary. ये समरी लगेगी. रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंचने देंगे तो तब है ना. रिटर्निंग ऑफिसर से आप रिपोर्टें मांग रहे हैं. खड़ा हो सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन खड़ा हो जाए उनको. क्यों नहीं? इलेक्शन कमीशन we did issue direction to each and every corner. आप आईजी को रिमूव कर सकते हैं अगर पुलिस वो हाई हैंडेडनेस करता है. आप क्यों नहीं कर सकते? इलेक्शन कमीशन के ताबे है इस वक्त सारी चीजें, मशीनरी जो है. दे हैव टू स्टैंड विद यू. They can't block the returning officers and pick the candidates or their returning officers or their proposers and seconders. Then that is not a contempt under section article 204 with regard to the. The Supreme Court is sitting as the guardian of the fundamental rights. Even Article 187 is annulled. I don't have to write any sections for invoking the jurisdiction of this court. Sections are irrelevant. Here the very state is at stake if the elections are not held freely and fairly. ये जो समरी है तो 31 लोगों के लिए ना, 31 फॉर्म. सर जितनी भी आई थी सर उनको हमारे पास ये आए थे उनको डिस्पोज ऑफ किया सर. जितनी भी साथ साथ आते रहे the commission took steps and forwarded it accordingly. एक आदमी राजनपुर, रुझान और बक्खर और सक्खर से तो नहीं आ सकता यहाँ इलेक्शन कमीशन के पास. वो तो वहीं करेगा मुकामी तौर पर. डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर, प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर. मैं वही लेटर आपको प्रोविंशियल इलेक्शन को, और इन्होंने जो अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट में लिखा है इन्होंने वही लिखा है कि वो लेटर. आपकी पूरी कंटेम्प्ट एप्लीकेशन पढ़ ली है, उसमें आपने कोई एक स्पेसिफिक एलिगेशन भी नहीं लगाया है. आपने बस जनरल बातें की हैं. फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वी कंप्लीटली एग्री विद दिस, वी 100% एंडोर्स इट. यू हैव नॉट मेड एनी एलिगेशन. I mean, what are we doing here? Sending people for contempt? You have just made, yes. This court has fixed the day, ensured the date for elections is taken fixed. This court is trying its utmost not to disrupt the election process. But where is there any specific allegation? Make a specific allegation. All it is, it's just general words. The Election Commission is under a constitutional duty to conduct free and fair elections. Yes. Under Article 218, yes. That
सर यू जस्ट सेइंग दिस जनरल बातें कर रहे हैं, तो कोई स्पेसिफिक बात हो तो हम उसको देख सकें, तो वेयर इज एनीथिंग स्पेसिफिक? So what do you, we can, unless you want us to substitute ourselves as the Election Commission of Pakistan, we should hold the elections ourselves. वो भी हमने करके देख लिया कि जो फिर क्या हुआ था उस इलेक्शन में, जो आपने जो एलिगेशंस लगाए थे, एंड फिर हम सुप्रीम कोर्ट ने कितना वक्त ज़ाया किया, और फिर वो मालूम हुआ कि कोई भी सब्सटैंशिएटेड एलिगेशन नहीं थे। 35 पंचर वाली जो बात इसी कोर्ट में हुई थी, उसमें भी उन्होंने बहुत सारी बेज़ाब्तियों का अनफर्ल किया था, अगरचे और हर चीज मुस्तरद हुई, ऑर्गेनाइज्ड उन्होंने हर चीज मुस्तरद हुई, ऑर्गेनाइज्ड हर चीज मुस्तरद हुई। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन इरेगुलरिटीज उन्होंने 47 स्पेल आउट की थी, उसमें भी यही हुआ था आपकी इसी को। भाई हम तो जजेस नहीं थे ना, मैं ये नहीं कह रहा, आप जो भी जजेस थे उस वक्त उन्होंने ये डिटरमिन किया, आपने कोर्ट का बेतहाशा वक्त ज़ाया किया आपने, और कोर्ट ने आपके सारे एलिगेशन मुस्तरद कर दिए। कोई कंपैरिजन नहीं है उसका और इसका, कोई कंपैरिजन नहीं। आज जो कुछ हो रहा है इस पाकिस्तान में, आप देख लें जरा, ये खुद चीफ अपना इलेक्शन कमिश्नर ने स्पेल आउट किया है 12 पे, जो मैंने अर्ज किया। इलेक्शन कमिश्नर हमने तो नहीं अपॉइंट किया है ना, आप ही ने अपॉइंट किया है। मैंने नहीं किया ना। तो आप जो बातें आप देखिए, कोई पाकिस्तान में कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है, बस क्यों नहीं प्रोएक्टिव इलेक्शन होने नहीं दे रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है। इलेक्शन कमीशन और इनको अथॉरिटीज को डायरेक्शन दे सकते हैं कि ये इससे ज्यादा डायरेक्शन हम क्या दे सकेंगे? 22 दिसंबर का ऑर्डर से सख्त ऑर्डर हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल ठीक है, बट उस पे अगर इन्होंने हमें टाल मटोल की होती, we would have taken them to task। तो नहीं किया ना। अब आप सुनते नहीं है ना, हम आपको सुनते हैं, आप बात करते हैं खामोशी से, वो बात कर रहे थे, आप उनको भी बार बार मैं तो आपको ही सुने जा रहा हूँ, कब मैं बोल रहा हूँ, आप ही बस बोल रहे, फिर आप बोल रहे, फिर हम चुपचाप बैठते हैं पुराने स्टाइल में। वो 12 वो पेज पढ़ ले। Whenever you finish, you tell us। 12 पेज पढ़ लें। 12 पेज आप बात समझने की कोशिश करें। मैंने समझ लिया। 24th of December। This report is dated 26th of December। कंप्लायंस रिपोर्ट में रेफर किया ना, उसमें इन्हीं का रेफर किया है। कंटेम्प्ट पिटीशन में आपकी 2 पेज की प्रेयर है, आप प्रेयर पढ़ें, वो कंटेम्प्ट में आती हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि जलसों की इजाजत दें, रैलीज की इजाजत दें, यानी कंटेम्प्ट तो सिर्फ इस चीज की कंटेम्प्ट है कि ऑर्डर की नॉन कंप्लायंस, उस हद तक कोर्ट देख सकता है कि जी हमारे ऑर्डर को वायलेट किया है, तो इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल टू फेस द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स। अगर आप अपनी प्रेयर क्लॉज पढ़े ना पेज 6 से 7 पे, तो आप तो इसमें ये भी कह रहे हैं रेस्पोंडेंट नंबर 2 मे काइंडली बी डायरेक्टेड टू टेक अगेंस्ट द कल्प्रिट्स अंडर सेक्शन 55, 184, 186, 187 एंड 188 ऑफ द इलेक्शन एक्ट। जिन्होंने मेरे प्रपोजल्स को उठाया है, जिन्होंने मेरे सेकेंडर्स को उठाया, तो सिर्फ उस ऑर्डर की हो रही है ना। हाँ, आप इसको नई पिटीशन के तौर पे आर्ग्यू कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है। दिस इज नॉट ए फ्रेश पिटीशन, दिस इज ओनली द प्रोसीडिंग्स ऑफ कंटेम्प्ट which can be initiated against the alleged contender if you will make out the case of contempt। सर पैराफ्री ऑफ टाइम है, शॉर्टन। माय लॉर्ड, आप चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये वी विल नॉट काउंटेनेंस एनी डिले इन द इलेक्शन। आई डोंट वांट टू बी प्रीवी टू दैट एट ऑल। आपने मेरे वकील को भी कंटेम्प्ट नोटिस दिया, सो आई कांट टेक दैट रिस्क ऑफ गोइंग टू द हाई कोर्ट बिकॉज आई डोंट वांट टू इन एनी मैनर व्हाटसोएवर आई डोंट वांट द डेफरमेंट ऑफ द इलेक्शन इवन फॉर अ मोमेंट, इवन फॉर अ मोमेंट। प्रेयर क्लॉज तो आपकी मेन जो पिटीशन जो यहाँ लगी होगी उससे बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दैट। सर इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ 2 पेज की सर आर्टिकल सेक्शन 184, 185, 186, 187 जो भी पकड़ता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है उस लेवल प्लेइंग फील्ड को, जो भी डिनाई करता है, उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है इलेक्शन कमीशन। व्हाई इज द इलेक्शन कमीशन स्लीपिंग ओवर इट एंड प्रीवी टू ऑल? यू हैव नॉट फाइल्ड अ सिंगल कंप्लेंट। Sir, we are asking you repeatedly, show us your complaints that you filed before the election commission. Election commission will, if it doesn't entertain your complaint, it's a different matter. They have implemented our order. Now, if you have a complaint, you should show us, this was my complaint, this was left unattended. CD देख लें फिर जो कुछ हो रहा है। फिर खोसा साहब, I think you should speak, and I don't know, you don't let us talk at all. Yeah, it's the other way around. मैं तो सर
as a law, as an officer of this court, मेरी तो ये ट्रेड में ही नहीं है कि मैं किसी को obstruct करूँ या ये कंटेंट में कंप्लायंस होनी है ना, कंप्लायंस होनी है। अब आप इनको अगर शिकायत करेंगे कोई, जो कि बार बार हम आपसे कह रहे हैं, बिकॉज हमारा तो ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग है, इसके अंदर हम बुला के किसी को कहें कि तुम कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग फेस करो, चार्ज फेस करें, लेवल प्लेइंग फील्ड दे दे। लेवल प्लेइंग फील्ड सारी दुनिया को नजर आ रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड आप नहीं दे रहे हैं इनको, बताइए। बिल्कुल दे रहे हैं सर, एक मिनट, एक दे रहे हैं सर। सर 550 पूछ लेना उनसे, एक मिनट बोलने दीजिए ना उनको। सर मैं सवाल किया है, जवाब तो देने दीजिए। सर विद योर परमिशन सर, ये जो अभी दोबारा रिपोर्ट दी है इसमें एज मनी एज 23 यहाँ हजारों की तादाद में हो रहा है। 30 complaints so far commission has received on record, and every complaint has been sent to the relevant quarter, even up to the level of the RO, to keep their offices open and accept the receive the nomination papers and decided according to law. There is an index, sir. There is a summary. And it is on the record, sir. Sir, ये जो फरमा रहे हैं para 3 मैं पढ़ देता हूँ. As you know that filing of nomination papers as per election schedule issued by the ECP is concluding today, while the receiving and filing of nomination papers is still marred by the incident of fear, intimidation, snatching of nomination papers, and other CS such acts in the hands of the police. In this way, the candidates are being discriminated against, as conducive environment is not being provided to all without any discrimination, December 2023, and unhinderedly. But the discouraging aspect of the situation, as mentioned above, is so that the returning officers, who mostly are from provincial / federal executive, are not acting in a proactive manner as the electoral laws demand from them. They seem unable to control the situation even inside their office premises by making it conducive for all the prospective candidates to attend their offices unhinderedly, without from intimidation, any discrimination for receiving and filing of their nomination papers uninterruptedly. Para 4, as you also know that all the executive authorities are bound to assist the Election Commission of Pakistan in the conduct of elections in a fair, free and transparent manner, as stipulated under Article 220 of the Road with Section 5 of the Elections Act 2017. But contrary to this, the concerned administrative authorities, including DRO, ROs and other functionaries working under the administrative control of the provincial government, are not rendering the requisite assistance as required of them under the quoted provision of law to provide, and hence is the clear violation of constitutional provision as well as of the provisions of electoral laws and directions instructions of ECP2. Foregoing in view, it is therefore requested kindly to intervene in the matter by issuing strict directions to all concerned under your administrative control to act proactively, effectively and promptly to provide a conducive environment at the premises of the RO's offices, so as all the prospective candidates could file their nomination papers of ease without any hindrance, fear and intimidation.